Hello, and a very good evening to all of you. My name is Ankit Sharma, and I'm a PhD scholar at Gujarat University, and I'm going to be a faculty for this particular demo session. This is the fourth demo session in the series. हमने sorry about that. हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया था which is recording of transactions in accounts, right? Basic accounting है और इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते this is the fourth demo session. We have already conducted 3 demo sessions. तो अगर आपको वो रिवाइज करना हो तो यू कैन go back and take a look at all of those demo sessions. So this particular demo session is to give you an insight into how these classes are conducted at CollegeDekho. Right? हर सेशन में हर टॉपिक में कितना डिटेल में जाया जाता है और हर सेशन के बाद आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स या नोट्स दिए जाते हैं. राइट. सो कमिंग बैक टू आवर सेशन, the name of the subject is financial accounting, right? और financial accounting में हमने एक टॉपिक पकड़ा था which is recording of transactions, right? This PPT is from an ongoing course of financial accounting, an ongoing batch of this course of financial accounting, right? And in that batch, this topic is covered under Unit 3, right? So since we are giving you a demo of how these classes are conducted, so we have taken this PPT from the regular course that is going on right now. Okay, so let us start with our topic. So again, since this is the fourth demo session, we have already covered a couple of these topics. हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं कि इसका क्या मतलब है और एग्जाम्पल हमने देखा था इसका, राइट? कि डबल एंट्री सिस्टम का बेसिकली मतलब क्या होता है. उसके बाद हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन पे आए थे. हमने बात की थी कि दो अलग तरीके की अप्रोच होती हैं. देयर आर टू अप्रोचेस टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट? द फर्स्ट वन इज द अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच and the second one is a traditional approach, right? We have already discussed this accounting equation approach. You can go back and have a look at the older demo sessions in this series, right? So हम लोग traditional approach के बारे में we had already started with traditional approach in the last session and today we are going to continue from there. Right? We've already discussed all of this, right? And in the traditional approach we had discussed personal accounts and today we will be starting with impersonal accounts, right? So again, to give you a brief to give you a brief revision of the traditional approach that we had started in the previous demo session, हमने बात की थी कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ट्रांजैक्शन हो, राइट? पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सबको 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, राइट? जितना जो भी ट्रांजैक्शन आप सोच सकते हो किसी भी बिजनेस में, ऑल ऑफ देम कैन बी क्लासिफाइड इन दीज 3 ग्रुप्स, राइट? ये क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज पर्सनल ट्रांजैक्शन, राइट? किसी पर्सन से रिलेट करते हुए ट्रांजैक्शन, राइट? वो पर्सन कौन हो सकता है? वो एक इंसान हो सकता है. इट कुड बी ए नेचुरल ह्यूमन बीइंग, इट कुड बी एन आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? जैसे कंपनी, राइट? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, right? Such other persons, right? So the first category is personal transactions, and anything apart from personal transactions are covered in category 2 and classification 2 and 3. What are these? Transactions related to assets and properties, right? Properties में क्या क्या आ गया? Land आ गया, building आ गई, right? Machinery assets में आएगी, right? So first classification is personal transaction, second is transactions related to assets and properties, और जो इन सब में नहीं आया वो थर्ड में आ गया. इनमें क्या क्या नहीं आया? कंपनी के एक्सपेंसेस नहीं आए, कंपनी के लॉसेस नहीं आए, इनकम नहीं आई, गेन्स नहीं आए, राइट? सो ऑल ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, जैसे रेंट का एक्सपेंस हुआ, राइट? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ, सैलरी एक्सपेंस हुए, वेजेस से रिलेटेड एक्सपेंस हुए, राइट? ऑल ऑफ दीज एक्सपेंसेस और लॉसेस, कई बार फायर हो गई जैसे कंपनी के वेयर हाउस में, तो लॉस रिलेटेड टू दैट, राइट? कंपनी ने अपनी सर्विसेज या गुड्स सेल करके जो इनकम की होगी, ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू दैट, राइट? किसी भी साल में कुछ प्रॉफिट हुआ हो, बी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट,
recording all of that, right? So basically, all the transactions can be classified in three groups which we talked about just now. तो हम इनके बारे में पढ़ते पढ़ते we have already discussed the first one, personal transactions, right? तो हमने पर्सनल अकाउंट्स के बारे में देखा था. देयर कुड बी थ्री टाइप्स ऑफ कैटेगरीज इन पर्सनल अकाउंट्स. फर्स्ट इज नेचुरल पर्सन, एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग जैसे मैं और आप. सेकंड इज आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, राइट. व्हाट आर दीज? जैसे कंपनी हो गई जो हमने अभी बात की, दैट अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. वो खुद से नहीं पैदा होते हैं. वी हैव टू ब्रिंग देम इनटू एग्जिस्टेंस by registering them under any specific law, right? जैसे कंपनी को कैसे एग्जिस्टेंस में लाया जाता है? कंपनीज एक्ट में उसको रजिस्टर करवा के, right? Apart from companies, government is also an artificial person, right? क्लब्स होते हैं जैसे स्पोर्ट्स क्लब हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, right? All of these are artificial personal accounts. And third category is the representative personal account. जैसे कि outstanding liability account or prepaid account or capital account, right? Even the capital account is representative personal account, or the drawings account, right? So these are the categories of personal account. इतना बात करके, and then we had to discuss the remaining two classifications. अभी वो देख लेते हैं. So if the first one is personal accounts, what would be the second one? Impersonal accounts, right? Impersonal accounts में क्या क्या आता है? जो कुछ भी personal account में नहीं आया, right? Any transaction that is not related to any person, any type of person, right? जो भी personal account में नहीं आया, वो सब impersonal account में आएगा. जैसे कि क्या? जैसे कि जो हमने यहाँ पे भी बात की थी कि पर्सनल ट्रांजेक्शन में जो भी नहीं आया वो बाकी के दो ट्रांजेक्शन में आएगा. सो पर्सनल को छोड़ के इम्पर्सनल में क्या क्या आ सकता है? ये दोनों आ सकते हैं, राइट. क्या क्या आ सकता है? जैसे एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन और एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम्स और गेन्स, राइट. ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ऑल ऑफ दीज. सो इफ द फर्स्ट कैटेगरी इज अबाउट पर्सनल अकाउंट्स, द सेकेंड वन वुड बी इम्पर्सनल. और पर्सनल में जो कुछ भी नहीं आया वो सब आएगा इम्पर्सनल में, राइट. क्या क्या लिखा है इम्पर्सनल के बारे में? लेट अस रीड दिस. अकाउंट्स व्हिच आर नॉट पर्सनल सच एज मशीनरी अकाउंट. मशीनरी अकाउंट इज नॉट पर्सनल, राइट. देयर इज नो पर्सन दैट इज अटैच्ड टू दिस मशीनरी, राइट. इस मशीनरी की कुछ अपनी आइडेंटिटी नहीं है. दिस मशीनरी इज नॉट अ पर्सन, right? Not a natural person, not an artificial person, not a representative person, right? ये जो third category थी हमारी representative personal accounts, it is not a representative personal account as well, right? So all of these accounts which are not personal accounts are your impersonal accounts. और उसमें example क्या क्या दिया है? Machinery account, right? Cash account, rent account, right? All of these are impersonal accounts. Now what does it say? That these can be further subdivided as follows. So impersonal account का भी subdivision है into two types of accounts. What are these? First is real account and the second one is nominal accounts. right? पहले हम real accounts पढ़ते हैं. So real accounts क्या बोल रहे हैं? Accounts which relate to assets of the firm but not debt. right? वापस से बैठिए. अकाउंट्स विच रिलेट टू एसेट्स ऑफ द फर्म. जो भी एसेट से रिलेटेड अकाउंट्स है, जो हमारी यहाँ पे सेकंड कैटेगरी थी, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, राइट. सो अपार्ट फ्रॉम दैट डेट, राइट, अपार्ट फ्रॉम डेट जो भी अकाउंट्स है कंपनी में, अकाउंट्स विच रिलेट टू एसेट्स, राइट, अकाउंट विच रिलेट टू एसेट्स ऑफ द फर्म बट नॉट डेट आर योर रियल अकाउंट्स. इसका क्या क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल होंगे ऑल दी एसेट्स, ऑल दी प्रॉपर्टीज. यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल दिए? फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स रिगार्डिंग लैंड, राइट, प्रॉपर्टी वाली बात आ गई. अकाउंट्स रिगार्डिंग लैंड और बिल्डिंग और अदर एसेट्स सच एज इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट एटसेट्रा आर रियल अकाउंट्स.
right? Cash in hand and cash at bank accounts are also real, right? So these are your real accounts. इम्पर्सनल की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी फिर नॉमिनल में क्या आया? अभी देखिए आप यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी क्या क्या कवर कर चुके हैं। वी हैव कवर्ड पर्सनल अकाउंट्स, राइट? पर्सनल अकाउंट्स में वी हैव टॉक्ड अबाउट दीज वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स, बी इट नेचुरल और आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, राइट? सो अगर आप लाइबिलिटीज की तरफ देखेंगे तो ये सब इवन कैपिटल अकाउंट इज कवर्ड, राइट? अगर आप एसेट्स की तरफ देखेंगे तो ये एसेट्स सब कवर हो चुके हैं और प्रॉपर्टीज सब कवर हो चुकी हैं, राइट? तो अभी बचा क्या है कवर करने के लिए? सो कवर होने के लिए अभी बचा है ऑल ऑफ दीज एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ दीज लॉसेस है, जो थर्ड कैटेगरी हमने देखी थी, राइट? एक्सपेंसेस कवर करने बाकी है, लॉसेस और इनकम्स और गेन, राइट? ऐसा कौन सा अकाउंट होता है हमारे बुक्स में विच शोज ऑल ऑफ दीज डिफरेंट क्लासिफिकेशंस, राइट? ऐसा कौन सा अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं जिसमें एक्सपेंसेस भी आते हैं, लॉसेस भी आते हैं, इनकम्स भी आती हैं, गेन्स भी आते हैं? इट इज अ ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? ट्रेडिंग अकाउंट जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्रेडिट साइड हम लोग सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? बाय सेल्स रेवेन्यू, राइट? व्हाट इज अ सेल्स रेवेन्यू? इट इज योर इनकम, राइट? और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड हम लोग क्या लिखते हैं? ऑल ऑफ द एक्सपेंसेस, राइट? ऑल ऑफ द लॉसेस, राइट? सॉरी, लॉस आता है हमारा क्रेडिट साइड पे। राइट साइड पे सबसे नीचे आता है गेन विच इज द नेट प्रॉफिट और द ग्रॉस प्रॉफिट, राइट? सो ऑल ऑफ दीज डिफरेंट आइटम्स relate to the trading and profit and loss account, right? So this is just to remember this is just a short small trick, right? So nominal accounts, mostly whatever is covered are your trading and profit and loss related items, right? What are these? Accounts which relate to expenses जैसे rent का expense और salary expenses, wages expenses, electricity bill expenses, right? And expenses को लिख के particular period accounting for revenue after accounting for expenses, net result could be more be profit, could be loss. So in calculation that, so what does it therefore tell को ना नहीं किया जाता? So हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, डिजिटल अप्रोच है, we have the what are the first, right? That person are, you know, artificial, but it could either be a data personal account, right? So personal assets and properties, right? These are the are usually shown in our trading in profit. ठीक है, ये क्लासिफिकेशन करने की क्या जरूरत है? इज टू अंडरस्टैंड, need to understand real accounts, nominal accounts. हम सब ऐसे ही अकाउंटिंग लिख लेते हैं, सीधा सीधा अकाउंट क्यों नहीं लिख सकते? सो द आंसर इज कितने अकाउंट के बारे में याद रखोगे?
ट्रीटमेंट ये है, पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर ट्रीटमेंट ये है, इफ टू इंक्रीज ट्रीटमेंट ये होगी, टू डिक्रीज अकाउंट की ट्रीटमेंट ये होगी. So if classification is to make easier treatment of these conflicts of these accounts, right? कि आपको पता है if account belongs to इस कैटेगरी के जो अकाउंट है उनकी ट्रीटमेंट रहती है, उनका नेचर वो पता करके ये एप्लीकेशन है. एग्जाम्पल, लेट्स रियल अकाउंट क्या क्या आता है, बट बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ का फीचर होता है, वो होता है डेबिट. एसेट्स का बेसिक होता है. यू हैव टू ट्रीट एनी एसेट, जैसे एग्जाम्पल है को इंक्रीज करना है, नई बिल्डिंग खरीद हमें इंक्रीज करना है, वी विल फॉलो रियल अकाउंट. पता है कि एसेट है और ये पता है कि रियल अकाउंट नेचर का क्या मतलब कि जो है होते हैं, राइट. कर देंगे, राइट. कर देंगे, राइट. ये सब what classifying the account is to understand their nature and to understand in the books of accounts, right. Nature classification person and nominal account, right. Now let us go to rules, right. These are the goals आपको बिल्कुल याद है. इससे अकाउंट है से उसको क्रेडिट किया, तो हमने का एग्जांपल अकाउंट, राइट. बिल्ड की वी आर बिल्डिंग and understand what is the account to be debit. So that is when we are going the building लेकिन हमने क्यों किया, क्योंकि ये देखिए the new building, वो books account में is it going out, right. As far as books of एक new building add हमारे business comes in, so that is why this building account is budgeted, right. और उसके सामने जो हमारा एक्सपेंस है या तो बैंक से गया होगा से लिया गया होगा, राइट. उसको क्रेडिट देंगे हम लोग. ऑलराइट, दिस इज रिमेंबर ऑल द टाइम. समझ में आ गया लेस कि आप you must first of all nominal account में क्या आता है, and secondly these rules. What are these rules? Personal account में debit register
remember these. Normal account में debit और expense और gain. ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल आगे है और and this is all time. Okay. So of example, following information account and be debited. The next nature if the account will be debited and will be credited. First started with the capital deal. ठीक है, 10 लाख के कैपिटल से लेटर अगर हम से 50 लाख से हमारे पास in this form is business. तो फिर इसका बैलेंस हमारे पास अभी हमने स्टार्ट नहीं है, ना ही कि हमने उधार पे बिजनेस स्टार्ट किया है. सो व्हाट दैट दिस 50 लाख इट द कैश अकाउंट बट दैट मींस 50 से यहाँ पे बैंक में अकाउंट बट इज ओनर का अकाउंट इनटू द अकाउंट वाया account capital account. And they have considered bank account. Alright, में कौन कौन से नेचर है अकाउंट्स का, राइट, दोनों नेचर हाउ अकाउंट है ऑलराइट. पर अकाउंट अकाउंट बाय आप हर अकाउंट का किताब है, अगर वो भी आर्टिफिशियल पर्सन आएगा. टू अंडरस्टैंड इफ अकाउंट अकाउंट पर्सन रिलेट टू कंपनी के ओनर का अकाउंट है, राइट. कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कंपनी के ओनर होता है, एक अकाउंट. अगर बैंक अकाउंट है, बैंक जब whenever you open a bank account you have to give the identification, right? Without identification you cannot open any bank account. तो वो या तो किसी इंसान के नाम पे बैंक अकाउंट खुलेगा या तो कंपनी के नाम पे बैंक अकाउंट खुलेगा, राइट. अगर किसी इंसान के अकाउंट पे बैंक अकाउंट खुल रहा है so that is a natural person, it automatically becomes a personal account, right. और अगर वो एक कंपनी के नाम पे खुल रहा है बैंक अकाउंट तो वो कंपनी इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल पर्सन, राइट. अगर वो आर्टिफिशियल पर्सन है तो अगेन इट इज अ नेचुरल, इट इज अ पर्सनल अकाउंट, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. सो द अकाउंट्स इन्वॉल्व बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एंड वी अंडरस्टूड कि इन दोनों का नेचर पर्सनल है. ठीक है, अभी हमारे रूल्स के हिसाब से पर्सनल अकाउंट के क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. ठीक है, तो अभी इसमें क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट रिसीवर है एंड कैपिटल अकाउंट गिवर है. कैपिटल अकाउंट गिवर कैसे हुआ, ओनर अपना इन्वेस्टमेंट लेके बिजनेस में आ रहा है, राइट. तो जो ओनर है, जो ओनर का अकाउंट है ये कैपिटल अकाउंट, राइट. ओनर इज गिविंग दिस इन्वेस्टमेंट टू द कंपनी,
राइट। सो द ओनर इज द गिवर एंड हमारा रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर कौन है? बैंक अकाउंट में वो मनी रिसीव हो रहा है, राइट। सो बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे एंड और क्रेडिट करेंगे गिवर को। गिवर कौन है? यहाँ पे ओनर है। ओनर का क्या अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन देखा हमने। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन? वेजेस एंड सैलरीज पेड, ठीक। तो या तो वेजेस पे की जा रही है या तो सैलरीज पे की जा रही है, ठीक है। तो अकाउंट्स क्या क्या इन्वॉल्व हुए? वेजेस और सैलरीज। और वो पे कैसे किए जा रहे हैं? या तो कैश में पे किए जाएंगे या तो फिर बैंक अकाउंट से पे किए जाएंगे। सो इसीलिए द सेकंड अकाउंट दैट इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व इज अ बैंक अकाउंट, राइट। ठीक है। अभी हमने अकाउंट्स इन्वॉल्व समझ लिया है। अभी इनका नेचर समझेंगे हम लोग। बैंक अकाउंट की हम लोग ऑलरेडी पहले ट्रांसेक्शन में बात कर चुके हैं दैट इट इज अ पर्सनल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में हम लोग सीधा यहाँ लिख देंगे दैट इट इज अ पर्सनल अकाउंट। बट व्हाट अबाउट वेजेस एंड सैलरीज? व्हाट आर दीज? फर्स्ट ऑफ ऑल, these are the expenses of the company, right? wages and salaries जो है, क्या वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है? नहीं है। क्या वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है? नहीं है। क्या वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है? नहीं है, राइट। तो क्या क्लियर हुआ कि वो पर्सनल अकाउंट तो नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। अभी आते हैं रियल अकाउंट पे। वेजेस एंड सैलरीज की हम लोग बात कर रहे हैं। क्या वेजेस एंड सैलरीज एसेट्स है कंपनी की? नहीं है। क्या वेजेस एंड सैलरीज प्रॉपर्टी है कंपनी की? नहीं, वो भी नहीं है। ठीक है, तो पर्सनल भी नहीं हुई और रियल भी नहीं हुई, तो क्या बचा? सिर्फ नॉमिनल अकाउंट बचा। और नॉमिनल में हमें पता है कि प्रॉफिट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी इंक्लूडेड रहता है, एज इन एक्सपेंस है या फिर लॉस है या फिर गेन है या फिर रेवेन्यू है, all of these different types of accounts, all of these different types of transactions, right, they are included in the nominal account, right? तो जो salaries है और wages है, they are the expenses of the company, right? और अगर वो expense है तो फिर वो क्या हुई? nominal account हुई, right? See, wages, salaries, nominal nature. All right, ठीक है, we have established that. अभी nominal account का क्या रूल है? What is the golden rule related to nominal account? तो नॉमिनल अकाउंट बोलता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, राइट। तो अभी हमारे इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, राइट, सैलरीज एंड वेजेस। तो सैलरीज एंड वेजेस ये एक्सपेंस वाली कैटेगरी में आ गए। रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो ये जो एक्सपेंसेस है इनको हम डेबिट कर देंगे। देखिए, नॉमिनल अकाउंट, वेजेस एंड सैलरी, डेबिट, राइट। और बैंक अकाउंट तो पर्सनल है, तो पर्सनल का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी बैंक अकाउंट में रुपए आ रहे हैं कि बैंक अकाउंट से रुपए जा रहे हैं? अगर कुछ भी एक्सपेंस पे किया जा रहा है तो बैंक अकाउंट में रुपए तो रिसीव हो ही नहीं सकते, रुपए तो विड्रॉ हो रहे हैं, रुपए तो और जा रहे हैं। तो मतलब बैंक अकाउंट इज अ गिवर इन दिस केस, that is why credit the giver, so that's why the bank account will be credited, right? Wages slash salaries to bank account. I hope all of this is very clear to you, because this is what forms the foundation of all the journal entries, right? Journal entries form the foundation for trading and profit and loss account, and then the balance sheet, all of that is made, right? So ये सब core है accounting का. These are the basic accounting rules, these are the basic accounting conventions, concepts, all of that. All right, so I think all of this, I hope all of this is very clear to you. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पहचानना है कि पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, रियल में क्या आता है, नॉमिनल में क्या आता है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू रिमेंबर दीज रूल्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर एंड ऑल ऑफ दीज, राइट। एक बार हमने ये याद कर लिया तो हमारी जर्नल एंट्रीज जो भी हैं वो बहुत इजीली हो जाएंगी, राइट, उतनी दिक्कत नहीं आएगी हमें। ऑलराइट, so I think we have come to the end of this session. Yes. So from next session we will continue
with this example itself. Alright, हमने पहले 2 ट्रांजेक्शन देखे, थर्ड ट्रांजेक्शन हम लोग नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे. And again, these are just to give you an insight into how these sessions are conducted. These are not a replacement of the regular sessions, right? Regular sessions में हर एक query को address किया जाता है, personal one-on-one sessions रहते हैं, right? So as of now मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, but in these regular sessions, regular doubt solving रहती है, assignments रहते हैं, all of that, alright? So I hope to see you in these regular sessions some other time, and thank you so much for logging in. Have a wonderful day.